हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल मेक थर्मल। माय नेम इज़ वेदांत जोशी और इस यूट्यूब चैनल पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्मल सब्जेक्ट से लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स और द एप्लीकेशंस विच आर रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट्स वो मैं कवर करने वाला हूँ। और मैं वही टॉपिक्स लूँगा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, IAS, बार्क और इसरो में इंपॉर्टेंट है। So let us start topic incompressible flow. Volume or density of fluid changes with change in temperature or pressure. Fluids usually expand as they are heated or depressurized and gets contract as they are cooled or pressurized. Okay. So to relate this volume change to change in pressure and temperature, one property come, that is bulk modulus. Now bulk modulus K is equal to minus dP divided by dB by V. Its unit is Newton per meter square. And or you can write in terms of density, that is K is equal to dP divided by d rho by rho, again the same unit, Newton per meter square. Okay, so this represents change in pressure corresponding to the fraction change in volume or change in pressure corresponding to the fraction change in density. For water, the value of K is 2 into 10 raised to 9 Newton per meter square. If the value of K is large, then it indicates that the large change in pressure is needed to cause small fraction change in volume. Now we will take the example of water. So water at 20 degrees Celsius, if the pressure is 1 atmosphere, then density of water is 998 kg per meter cube. And if the pressure is 100 atmosphere, then density of water is 1003 kg per meter cube. Okay, so a fluid is said to be incompressible if its density or volume does not change or change with very little amount. Okay, with change in pressure, temperature और velocity. So हम इधर से देख सकते हैं कि प्रेशर जब 100 टाइम्स हमने इंक्रीज किया पर फिर भी ये जो डिफरेंस इन डेंसिटी ये बहुत कम है. ओके, सो चेंज इज वेरी लिटिल विद दिस अमाउंट. ओके, सो जब फ्लूइड्स की डेंसिटी और वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होती या फिर होती भी है तो बहुत कम अमाउंट से होती है, तो उस फ्लूइड्स को हम इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड टर्म इज कंप्रेसिबिलिटी. इट इज नथिंग बट जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस 1/K is equal to minus dB divided by V divided by dP. Okay, in terms of density, d rho by rho divided by dP. So this represents the fraction of change in volume or density for the unit change in pressure. Okay, so compressibility of liquid is negligible, so practically liquids are incompressible in nature. Now we will take one problem on this. A liquid is compressed in cylinder from volume of 1000 centimeter cube at 1 meganewton per meter square to volume of 995 centimeter cube at 2 meganewton per meter square, and you have to find out K, that is bulk modulus. So the change in volume dV will be equal to final volume minus initial volume, that is 995 minus 1000, which will be minus 5 centimeter cube, and change in pressure dP final minus initial 2 minus 1 is equal to 1 meganewton per meter square. Okay, so the bulk modulus of elasticity is minus dP divided by dB by V, so is equal to this pressure difference is 1 meganewton per meter square, that is 1 into 10 raised to 6 Newton per meter square. dV is 5 minus 5, but this minus and this minus sign gets cancelled, so it will be 5, and the initial volume is 1000. Okay, so the final answer comes out to be 200 megapascal, that is 200 into 10 raised to 6 Newton per meter square. Now we will go for compressible flow. A fluid is said to be compressible if its density changes with change in pressure or temperature or velocity. Okay, and these flows are encountered in device that involves the flow of gases at very high velocity, like the flows in aeroplane, spacecrafts or missiles. Okay, so the gases are compressible. जैसे कि liquids incompressible है, वैसे gases are compressible. Now there are two important parameters in study and analysis of compressible flow. The first one is speed of sound and the second one is Mach number. Okay, so first we will go for the speed of sound. The C, that is the speed of sound, is equal to the root of dP by d rho, that is pressure difference divided by density difference, is equal to root of Ks by rho. Now this is isentropic bulk modulus divided by density, is equal to the root of gamma RT, where gamma is adiabatic index, R is the gas characteristics constant, and T is your absolute temperature. Okay, so these are directly equations. अभी मैं इधर डिराइव नहीं करने वाला क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई आपको डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है. You have to just put value in this equation and get the answer, that's it. Okay, so learn this formula. Now these two are general equations of speed of sound, and this the third equation, that is root of gamma RT, it is for perfect gas or ideal gas, you can say.
Now this is one point, that speed of sound changes with temperature and varies with fluid. Okay, so let us take an example. At 200 Kelvin temperature, okay, the air will have the velocity of 284 meter per second, and the helium at the same temperature will have the velocity of 832 meter per second. So the speed of sound varies with the fluid. Okay, now second important parameter is Mach number. It is the ratio of velocity of fluid flow V divided by the speed of sound in the same fluid, that is C. Okay, so the Mach number depends on the speed of sound, which depends on the state of fluid and temperature. C तुम्हारा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर और स्टेट ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करेगा. ओके, सो वी कैन से दैट मैक नंबर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ साउंड. द मैक नंबर कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, इवन द फ्लाइट स्पीड इज सेम. ओके, सो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज यू हैव दिस टू मिसाइल्स. ओके, द वेलोसिटी ऑफ दिस मिसाइल्स आर 320 मीटर पर सेकंड. एक्चुअली वेलोसिटी मिसाइल का बहुत होता है, पर जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई हैव एज्यूम दिस 320 मीटर पर सेकंड. ओके, सो अगर जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है रूट ऑफ गैमा आर टी, इधर आप टेम्परेचर की वैल्यूज पुट करते हो, गैमा तो तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा और आर भी कांस्टेंट रहेगा, तो तुम्हारा मैक नंबर फर्स्ट केस में 1.08 आएगा और सेकेंड केस में 0.92 आएगा. तो ये जो तुम्हारा मैक नंबर है ये सेम टेम्परेचर्स डिफरेंट टेम्परेचर्स में भी अगर तुम्हारा सेम स्पीड है तो भी अलग होगा. ओके, सो द मैच नंबर इज डिफरेंट at different temperature even if the flight speed is same. Now these are some you can say classifications of the flow on the basis of Mach number. If your Mach number is less than equal to 0.3 then it is incompressible flow. If your Mach number is greater than 0.3 then it is compressible flow. If your Mach number is greater than 0.3 but less than 1 then it is subsonic flow. If your Mach number is 1 then it is sonic flow. If your Mach number is less than 5 but greater than 1 then it is supersonic flow, and if your Mach number is greater than 5 then it is hypersonic flow. Okay, so ये क्लासिफिकेशन है. और ये जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ओके, तो उसका मैक नंबर 3 है और उसका वेलोसिटी 3700 किलोमीटर पर आवर है. इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकंड. ओके, सो इसका मैक नंबर 3 है. सो 3 है विच इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5. सो जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो फ्लो रहता है वो सुपरसोनिक फ्लो रहता है. ओके, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल. और ये जो ब्रह्मोस 2 जो है ये दिस इज अंडर डेवलपमेंट. सो इसका भी वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 7 to 8 मैच नंबर आएगा. सो 7 to 8 मैक नंबर, नाउ दिस इज ग्रेटर देन 5, सो it will be a hypersonic flow. So the BrahMos 2 will be called as the hypersonic missile. Okay, so in the missiles and rockets generally the speed is given by the Mach number, and accordingly this sonic, hypersonic, and these are classified according to this Mach number. Now we'll solve problems for the compressible flow. Okay, the aeroplane is cruising at the speed of 800 km per hour where air temperature is given as 0 degree Celsius. The flight Mach number at this speed is, okay, you have to find the Mach number. So Mach number is V by C. C is equal to root of gamma RT. Now for air, gamma, that is adiabatic index, is value is 1.4, R is 287 जूल पर kg केल्विन. ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में दे देंगे. एंड T, सो ये डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद ये 273 केल्विन आ जाएगा. सो पुटिंग द वैल्यूज root of 1.4 into 287 into 273, so the value of C comes out to be 331.196 meter per second. Okay, so the Mach number is V by C. तो ये जो V है 800 किलोमीटर पर आवर, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है. सो क्योंकि आपके यूनिट सेम रहने चाहिए. सो 222.22 डिवाइडेड बाय 331.196 comes out to be 0.67. ओके, सो 0.67 विच इज लेस देन 1. सो ये जो फ्लो होगा ये सबसोनिक फ्लो होगा. Now the second problem is, now this problem was asked in ISRO exam 2016. Okay, the velocity of sound in winter compared to summer is, okay, so we know the formula, speed of sound is equal to root of gamma RT. So in winter the temperature is less as compared to summer, so the speed of sound in winter will be less compared to summer. Okay, so अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है और या फिर आपको ये जो सब कंसेप्ट है थर्मल इंजीनियरिंग के, अगर आपको इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो आप स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉलो करो. मैं जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉलो करता हूँ
उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आपको अगर चाहिए तो आप वो देख सकते हो। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। आई होप you enjoyed the video. Like, share and subscribe. Thank you.